Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is me again, Umar Farooq Sumro, teacher of English. Dear students, as in our previous two lectures, we read about grammar. In first lecture, we read about types of sentences and also structure of sentences. In second, we read about noun and about rules and regulations of grammar. Dear students, this is your lecture number 3 of English grammar. And now we are going to learn about subtypes of the noun. Students, as I told you, noun is a word taken from a Latin language word nomen that clearly means name. So as you can see many things with your eyes, you will give it a name. So everything that you watch with your eyes can also be called noun. And I told you that we will read about subtypes of noun in our second lecture. So dear students, today we are going to start our lecture number 3 of grammar from subtypes of noun. So students, as you are watching on your screen on this white page, subtypes of noun are headed over, and I have written here 5 types or 5 subtypes of noun that are common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. As you can see clearly on your screen, I have defined 5 names of 5 nouns or subtypes of nouns. So dear students, names, there are many types of names. Some are called common, some names are called proper, some are called abstract, some are called material and some are called proper or common. So dear students, here is type number 1 of noun, common. Dear students, as you can guess the definition of this noun from its name, or you have already read this, that common. What would be the probably meaning? The meaning of this word is common, that clearly means that it is the name given in common to every person, place, animal or anything. Name given in common to every person, place, animal or anything is called common noun. And some examples to make you understand, to help you out to define this type of noun are boy, girl, school, mosque, city, country. So number 1 example is boy. First, students, can you please focus on my words, that if I call a boy from your class and I say, oh boy, come here, so you all will guess whom sir has called. You will not get perfect idea that whom I have called, but you will probably guess that whom sir is called. Okay, so but if I say Saveed, Naim, Ali, so it will be their names. But if I say boy, so it is the common name that I can call to every boy in your classroom. I can say every single male or masculine gender boy in your class. If there are 10 students in your class, I can say each of the boy. The word would be boy. Same as the girl. If there are 5 girls in the classroom and I call, oh girl, focus on your lecture. So for all the 5 girls will be going to think that whom has sir said these words, but they will not get perfect idea that whom has sir said these words, because girl, a masculine gender, denotes to a boy, a feminine gender denotes to a girl, a lady, a woman. Okay, so these are common names that I can call to every type of any type of same gender. Dear students, अगर आपकी क्लास में 10 बॉयज़ बैठे हों, 10 लड़के बैठे हों और मैं किसी को कहूँ ओ लड़के इधर आओ, तो आप सब जो है वो हैरत से मेरी तरफ देखेंगे कि पता नहीं सर ने तो किसे कहा है आने के लिए, क्यों कि ऐसा नाम सर ने लिया है जो हम सब के लिए कॉमन है. बॉय अगर 10 है तो कॉमन है 10 के लिए, 100 है तो 100 के लिए भी बॉय बॉय ही रहेगा. सेम एज गर्ल्स के लिए भी है. अगर गर्ल्स को मैं लड़की कह के बुलाऊं, गर्ल कह के बुलाऊं और 10 गर्ल्स और बैठी हों तो वो भी सोचेंगी कि सर ने आखिर नाम किसका लिया है. जब तक मैं डिफ़ाइन न करूं या इशारा न करूं कह के कि ये गर्ल, तो ये नेम कॉमन होगा. डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह स्कूल,
आप जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ बाकी आपने बहुत सी जगहें देखी हैं जहाँ तालीम दी जाती है, उन्हें स्कूल कॉलेज कहा जाता है, स्कूल और कॉलेज, ठीक है। तो अगर वो स्कूल है, हम जहाँ पढ़ते हैं ये कॉलेज है, शाह लतीफ़ एक कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है, बहरिया एक कॉलेज है, IB एक कॉलेज है, स्टार ग्रामर एक स्कूल है और फाउंडेशन स्कूल सिस्टम है। तो स्कूल और कॉलेज ये हम किसी को, यानी जहाँ भी तालीम दी जाती है, हम कह सकते हैं कॉमनली ये कॉमन नेम है स्कूल और कॉलेज, ओके। वी कैन कॉल or give a name to any place where students are being studied, we can call it school. Same as mosque, as you have seen many mosques in our country, in our city, in our province and in the world, that there are too many mosques where Muslims pray to God, okay, but each one has the name mosque. But if I say I went to mosque, so you may not know in which mosque did I go to offer prayer until if I don't tell you the name, okay. मैं अगर कहूँ कि मैं नमाज़ पढ़ने गया था मस्जिद में, तो आपको यकीनन ये नहीं मालूम होगा कि आखिर मैंने मस्जिद तो कहा है, पर कौन सी मस्जिद, जब तक उसका क्लियर नेम डिफ़ाइन नहीं किया जाता तो वो मस्जिद, मॉस्क जो लफ्ज़ है वो कॉमन है, ओके। इसी तरह डियर स्टूडेंट, सिटी यानी शहर, जब तक उसका ख़ास कोई नाम न लिया जाए ये कॉमन है। इसी तरह लफ्ज़ कंट्री, ये भी इट इज़ ऑल्सो द कॉमन वर्ड्स अंटिल वी डू नॉट कॉल देयर यूनिक प्रॉपर नेम्स, ओके डियर स्टूडेंट्स। नंबर 2, प्रॉपर नाउन्स। Proper means particular, unique. Generally, proper noun indicates to a unique person. Unique means proper, defined. Here, the name is not defined, common names are used. But when we talk about proper nouns, it indicates to a unique person, means identified person, whose name or the place name is defined. Place, person, animal or anything. Example, I have written some words of the boys or girls from your class. Example, Saveed. But if I say boy, boy would be common for each and every boy or masculine gender in your class. But if I say Saveed, so it will not be common for everyone like boy. It will be proper and unique for the boy Saveed. And if I say a name of girl, Zahra, so if I call Zahra, Maliha will not come to me. Zahra, if I say Zahra, come to me, so Zahra will come, not Maliha, okay. Because the proper name of Zahra is called and defined. It is called proper nouns. And as I written the common noun example, school, here I have written the name of a school, for example Air Foundation, Bahria Foundation College, IBA College. So if I talk about the name or proper or unique name defined, it will become proper noun. As I told you, mosque, where Muslims pray to God, is called a mosque. But if I define the name Masjid-e-Nabawi, so the name will be defined as proper. Students, अगर हम किसी भी जगह का ख़ास नाम ले लेते हैं, ख़ास नाम जैसे मस्जिद नबवी, वैसे मस्जिद कॉमन है, मस्जिद नबवी, अब ये ख़ास हो गया। कॉलेज, कॉलेज कॉमन है, हमने नेम ले लिया बहरिया फाउंडेशन, तो अब ये प्रॉपर हो गया। इसी तरह मैंने अब लिखा है सिटी। अब सिटी तो आप किसी भी बड़े एरिया के जगह को कह सकते हो, पर अगर किसी का नाम आ जाए जैसे नौशेरो फिरोज़, कराची, Lahore, so it will become proper nouns, okay. And I have written in the last example of common noun, country. You can call every state a country, but when it is defined the name Pakistan, Saudi Arabia, the names will become unique and will be defined as proper nouns. Dear students, अगर किसी भी चीज़ का हम कॉमन आम नेम लेते हैं तो ये कॉमन है, पर उसी का डिफ़ाइन किया हुआ जो उसका अपना ख़ास नेम है, अगर हम वो यूज़ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर। एंड नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। डियर स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन is defined as the names of collection or group of things taken together is spoken as one whole. अगर हम किसी भी चीज़ जिसका नाम एक लेते हों पर वो कितनी ही चीज़ों का जमा हो, नाम एक हो पर कितनी ही चीज़ों का जमा हो, ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर आई हैव रिटन एन एग्जाम्पल इन स्टार्टिंग आर्मी. So how many words are there in army?
just one. Does it give meaning to a single person? No, it defines the whole, all the soldiers and the people of army, but the word is just one. Secondly, we have bundle. If I say any students go and take a bundle of sticks for me, अगर मैं किसी स्टूडेंट को कहूँ कि जाकर मेरे लिए लकड़ियों का एक बंडल लाएं, तो क्या वो स्टूडेंट मेरे लिए, मैं जब कहूँ कि लकड़ियों का बंडल लेके आए, तो क्या वो एक स्टिक ले आएंगे? कोई भी, मैं कहूँ बंडल ले आए तो आप एक स्टिक ले आओ, तो क्या बात सही होगी? गुड, सही नहीं होगी। क्यों? कि बंडल की माना ही यही है जिसमें एक से ज़्यादा हों, बहुत ज़्यादा भी हों, पर उसका नाम क्या हो? सिर्फ बंडल। And number 3, bunch. I have written an example on number 3rd, bunch. Bunch is also defined as a bunch of keys. As you have seen that there are many keys in a thing that is called bunch. अगर किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा चाबियाँ इंगेज लगी हुई हों, इसे हम बंच कहते हैं। तो बंच तभी बनता है जब बहुत सारी चाबियाँ एक चीज़ में इक्विप हों, पर अगर सिर्फ एक चाबी होगी उसमें तो बंच नहीं, सिंगल की कहलाएगी। क्यों? कि ये प्रॉपर कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है जिसमें नाम एक पर कितनी ही चीज़ों के जमा की माना दिखाता है। जैसे क्राउड, अब क्राउड वर्ड कितने हैं? एक, पर क्राउड हम भीड़ को कहते हैं, लोगों की भीड़ जमा होती है जहाँ मेनी पीपल, गैदरिंग ऑफ मेनी पीपल इज कॉल्ड क्राउड। अब क्राउड कहने में आपका सिंगल वर्ड है एक, पर क्राउड का मतलब बहुत सारे लोग, भीड़। ओके, एंड ऑन नंबर 5, डजन. Dozen means 12. If I say go and purchase a dozen of eggs for me, अगर मैं कहूँ कि एक दर्जन मेरे लिए अंडे आप ख़रीद लाएं, कोई भी, तो आप क्या 2 अंडे 2 एग्स खरीद कर लाएंगे? नहीं। क्यों? डजन gives the meaning of 12 things. 12 objects are included in a dozen. एक डजन में 12 चीज़ें होती हैं। And number 6 and in the last, flock. Flock is called a group or row of animals or birds. Group of animals is called a flock. ओके, झुंड होता है जिसे हम झुंड कहते हैं, वो जानवरों का होता है। और अगर हम बर्ड्स की बात करें तो उनकी रो होती है। आपने हमेशा रो देखी है, या हम क्लास में भी या हम असेंबली में भी रो बनाते हैं, तो क्या कभी रो में एक ही स्टूडेंट हो सकता है? नहीं। इसी तरह फ्लॉक में भी अगर झुंड है जानवरों का, बहुत ज़्यादा होंगे तभी फ्लॉक कहेंगे, और अगर बर्ड्स बहुत ज़्यादा होंगे तो ही उन्हें फ्लॉक या रो कहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, I defined common noun, proper and collective noun in today's lecture. I hope you will all understand it easily. If you do not understand something or here is anything problematic, you can ask me on our WhatsApp groups. All your questions will be asked comfortably and you will be given satisfactory answers. Dear students, today's lecture of English language grammar ends here. We will meet in our next lecture. Until Allah Hafiz.